ट्रेनिंग प्रोग्राम जो स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ चल रहे हैं। वी हैव हियर विद अस हमारे जो एक्सपर्ट आज गेस्ट है फॉर द लेक्चर के लिए इस डॉक्टर शबीर अहमद वेटनरी असिस्टेंट सर्जन है फील्ड में। इनको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा फील्ड लेवल पर, फील्ड सिनेरियो क्या है रिगार्डिंग द डिजीज़ इन फार्म एनिमल्स, स्पेशली मास्टाइटिस के बारे में हमें ये बताएंगे। तो प्लीज़ सर। Honorable Dr. AJAZ sir, in charge head preventive veterinary medicine. Respected Dr. NUZHAT, assistant professor in Department of Veterinary and Preventive Medicine. My dear friends and colleagues, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You might be well aware with this disease, bovine mastitis. Probably the scientists will teach you better what is mastitis. But as far as my topic is concerned, I will give a field touch that how it creates pandemic and how it acts as a double-edged sword. It on one hand side affects your production of the animal, and on the other hand side you have to treat the animal, and that is included along that comes to us with an additional cost. So it is better to prevent this disease rather than to keep the disease in the farm. Bovine mastitis, actually this disease, it has three important characteristics. One is the change in the milk. You will see physical change in the milk, that milk is good or there is blood in milk. Another is the tissue is become inflamed. The udder becomes hard and becomes swollen. Third thing is that there is somatic cell, increase in somatic cell count. Then types are usually clinical and subclinical. Subclinical is more dangerous than clinical. Clinical is easy to diagnose. Subclinical becomes a challenge, and that keeps on going on in the farm for quite a long time. Impact is that on one hand side we get reduced milk yield, and another is that we have to increase the additional input costs. Mostly in Kashmir region, these are associated with bacterial infections only, especially this staph and streptococcus. Then there are environmental factors for this as well. But we may be mostly involved in these managemental practices and how to prevent this disease to come into our farm. First, we will go deep down in this, what is the statistics of this bovine mastitis in Kashmir region. As far as 2022 data was not available with the department. So in 2019, it was 9.45%. Means almost, if we have 100 animals, almost 9.5 animals were affected by this disease. In 2020, it increases, and it is continuously increasing because of going to concretization of these floors and going to large size of the farm. Since we are a cold, we can say cold weather region, as far as Kashmir is concerned, as compared to other tropical or temperate regions like this Jammu and Punjab, we have majority of cases in winters as compared to other parts of the country. They have most of the cases in summers.
This is the regional disparity between as far as bovine mastitis is concerned in Kashmir. So probably in 2022, its prevalence rate has been more than this 13%, and in this year, because of LSD and this FMD, in FMD there is a sequelae of this teats, bovine teats, they get affected as well. And in LSD cases, other inflammation, and there were lactoliths were found. We have papers in the field that lactoliths because of LSD were found in bovine udder, and that caused a severe mastitis, probably which was very difficult to treat. Then actually why it is important? Since dairy farming is a profitable venture, we take this dairy farming as a revenue generation or income generation opportunity. But if this comes into our farm, we get two types of losses. One is economic losses, and another is the health implications. Recently, probably may not be more than 10 days, around in GMC Srinagar, they were all unanimous to conclude that veterinarians and probably the animals are responsible for this antibiotic resistance, which causes havoc in Kashmir. They are feeling the pulse that presently available antibiotics are not working in humans. What earlier used to show tremendous significant effects. So since when there is a mastitis, there is reduced milk production. Since udder is inflamed, it's a diseased tissue. So in a disease, when there is a disease, the input or the ability becomes compromised. Therefore, the animal, the reduction, there is a sharp decline in milk production. Whether this bovine mastitis affects all the quarters, all the 4 quarters, or 1 quarter as well, then we have to treat this disease, and there is a cost involved in it, antibiotic cost, then other ancillary treatment. So it is a, we can say, double-edged sword. It on one hand side, it decline our production or the revenue component. On the other hand side, we have to expand, we have to make, we have to use many to purchase antibiotics and other things. So the economic losses are from that side. As far as health implication is concerned, we have to use antibiotics to treat this. If it is a clinical mastitis, of course, then the quality of milk gets compromised, and you will feel the pulse that people will say, no, your milk is not now good enough. Wherever we are using, whether curd, whether we use this in tea, so quality of milk as well as this antibiotic resistance. This is a very, very important issue. Antibiotic resistance is increasing, and it takes, as a pharmacologist, I will say it takes more than 10 years to found a new antibiotic or antimicrobial. But if we don't use these antimicrobials or antibiotics judiciously, it may take less than a year to develop resistance against these judicious and life-saving antibiotics. Then in Kashmir, as I earlier said, that we have a problem of cold climate here. Not that in summers we face this issue. See, this mastitis, bovine mastitis, is an ascending infection. It does not come from this animal inside, or there is something animal ने कुछ उल्टा सीधा खाया तो उसको ऐसा नहीं है. But actually it is majority of the infections are ascending. More than 95% infections are ascending infections. ये नीचे से ही आ जाते हैं, शर्ट से आ जाते हैं,
जो काउशेड है उससे आ जाते हैं बोवेन आर्डर में। तो वी हैव दिस प्रोलॉन्ग्ड विंटर सीजन हियर इन कश्मीर, सो उसके करके और फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट अ डिकेड नाउ पीपल हैव शिफ्टेड टू कंक्रीट फ्लोर्स इंस्टेड ऑफ जो हमें पहले हुआ करते थे यूज्ड टू हैव those muddy or we can say soil clad floors. They were tested and proven, but these concrete floors are not meant for Kashmir region as far as dairy farming is concerned. We should try to go back to those only, because this concretization you should say return. It keeps this water for prolonged period of time, and by what happens with that animal udder and this surroundings remain wet and dirty, so the infection comes in. इसके udder में लग जाता है तो easily assess हो जाता है कि wet it हो जाता है अंदर. And since we have prolonged winters, we have to keep these animals in house. Winter में especially जो हमारे डेयरी फार्मर्स है, बड़े डेयरी फार्म्स है 10-12, और स्पेशली जो श्रीनगर एंड इन एंड अराउंड में है या पेरिफेरीज में भी है, उनको तो वहाँ पे स्नो क्लेड रहता है, तो हमें इन हाउस ही रखना पड़ता है. यानी जानवरों को प्रोबेबली नवंबर से मार्च तक ये अंदर ही रहेंगे. तो उससे क्या हो जाता है, एक अशिन वेंटिलेशन की ही दपन वुशनेर को रोजन वुशनेर करके we compromise ventilation. Ventilation is must for a healthy animal for better immunity. And third thing is that lack of awareness and education. कभी हमें concerned डॉक्टर साहिबान या जो concerned personnel है वो they try to educate us that this is not good and tested for you, you should go for this thing. लेकिन हम YouTube पे वीडियो देखते हैं कि वहाँ पे तो ऐसे सिस्टम है, वहाँ पे कंक्रीट फ्लोर्स है, उनको हम वॉश करते हैं. That is meant for temperate and tropical regions, not for our region, cold region. क्योंकि वहाँ पे वो जब क्लीन करते हैं पानी से तो ऑलमोस्ट वो 5 या 10 मिनट में ड्राई हो जाता है. लेकिन इन दिस कश्मीर इट मे नॉट ड्राई फॉर द होल डे. और अब अगर आपके फिर दूसरे जानवर होंगे, दे यूरिनेट, दे डेफिकेट एंड देन देयर आर अदर थिंग्स एज वेल. वहाँ पे इतनी एज अ फील्ड एक्सपीरियंस मैं आपको बोल रहा हूँ, जहाँ पे भी मोर देन 4-5 एनिमल्स है इन हाउस रहते हैं और कंक्रीट या इवन रबर मैट्स जो यूज करते हैं, वहाँ पे आप ड्राई नहीं देखोगे. किसी भी मूवमेंट पे वो वहाँ पे आप ड्राई फ्लोर नहीं देखोगे. That becomes the very important reason as far as mastitis is concerned. ड्राई जितना भी होगा आपके एनिमल्स सेफ है, आपके एनिमल्स सेफ रहेंगे. वेट रहेगा आपके एनिमल्स आर प्रोन टू mastitis और इन्फेक्शन लग भी जाएगा. कंसिक्वेंसेस ऑफ इन हाउसिंग, क्योंकि फ्रेश एयर नहीं मिलता है, हमें गर्मी रखनी है, देयर मस्ट बी अ प्रोविजन कि हम, लेकिन वेंटिलेशन इज पथ कुछ थोड़ा जाए था सो दैट फ्रेश एयर कम्स इन और कहीं से वो बाहर निकले. क्रॉस वेंटिलेशन शुड बी देयर. एक साइड से एक एयर आना चाहिए, दूसरे साइड से एयर जाना चाहिए. स्ट्रेटजीज टू एड्रेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस, इसमें हम आएंगे हाउसिंग डिजाइन पे. Preventive measures, how can we prevent? See, we cannot escape from this weather. हमें कश्मीर में ही डेयरी फार्मिंग करनी है, कश्मीर में ही रहना है, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि we can develop that climate of or weather of tropical region. हमें यहीं पे अपने आप को ऐसे इक्विप या हाउसिंग डिजाइन करना है so that we can prevent this bovine mastitis. Proper housing design. A cross ventilation is must so that our animals may not face this immunity issue. Then hygienic practices. जितना भी हो सके कि hygiene, we have to adopt hygienic practices. Frequent cleaning, जो भी वो urinate और defecation होगी उनकी, तो वो almost
आई कैन से 3-4 टाइम्स आपको वो क्लीन करना पड़ेगा। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ मैनेजमेंट स्पेशली इन विंटर्स, एक तो अभी तो इम्यूनिटी बूस्टर्स भी आ गए, थैंकफुल फॉर दिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, and then nutrition enhancers so that the animals immunity of the animals get a boost to counter this bovine mastitis, and early detection strategies। हमें क्या होता है कि यूजुअली ओनर्स देखते हैं कि फ्लेक्स आ जाते हैं, यह दोधस चेलिस कारण यह लोगन फटने या अथ मज बदल नुन मज हो, दैट इज अ सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस। उसी टाइम आप को कंसर्न्ड फील्ड वेटनेरियन को कॉल करना है या कंसल्ट करना है सो दैट ही कैन गिव यू एडवाइस एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस के लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कंपैरेटिवली डिफरेंट है एज कंपेयर टू क्लिनिकल मेस्टाइटिस के। Now, role of dairy farmers. Where is your role important as far as this prevention of dairy mastitis is concerned? Without this, if you will, follow A to Z, but without following this component, you will fail as a dairy farmer. Then proper milking techniques. There are 3 milking techniques: this stripping, full hand milking, and knuckling. You have to go for full hand milking if you are going for this hand milking. Or now government is providing subsidy for milking machines as well, 50% subsidy, and we must those especially for dairy farmers for where the size, the unit size is more than 5 cow or more than that 6, 10, 20, 30, 50. We must go for milking machines. Then culling infected animals. Wherever the animal is infected and it shows chronicity that on every year this animal gets infected by this mastitis, so it is better to cull that. It is better to solve that animal instead to keep that in your farm. Difficult to treat once it sets in your farm. Sorry. Another responsibility for you is that once you get accustomed to this dairy farming, people start self-treating this disease. They say that डॉक्टर साहब आएगा वो भी सेप्ट्रोक्सोन लिखेगा, सेप्ट्रोक्सोन सल्फेटम लिखेगा, ये तो हमें पता ही है, आप तो इसलिए लिखना है। No. As I earlier said that it takes years together, more than 10 years to develop one antibiotic, and that is effective. So I would suggest that we should go for culture and AST based antibiotic therapy. जब आप कंसल्ट करोगे डॉक्टर साहबान को कि वो बोलेगा आपको नहीं जी, पहले बिफोर यूजिंग दिस एंटीबायोटिक पहले आप इसको हमारे लैब्स है, डिस्ट्रिक्ट लैब्स है या सेंट्रल वेटनरी लैब्स है या सुकास्ट में हमें बहुत कोऑपरेट करता है इसमें, तो आपको मिल्क सैंपल एक क्लीन कंटेनर में जो एसेप्टिक है उसमें हम आपको बोलते हैं कि इसको टेस्ट करो। वहां से आइदर कल्चर बेस्ड कि ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे इन्फेक्शन हुआ है, या इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कौन सा एंटीमाइक्रोबियल ज्यादा इफेक्टिव है, हम वो यूज करेंगे। इंस्टेड की नहीं जी हमारा नॉर्म ही है कि हम करेंगे यूज, वी विल नॉट वेट। सैंपल लेके फिर जो कंसर्न वेटनेरियन है, वी मस्ट गो फ्रॉम लोअर साइड, हम लोअर साइड से एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज अगर हम पहले ही हायर साइड से स्टार्ट करेंगे, इफ दैट विल नॉट शो इफेक्ट, द लोअर साइड एंटीबायोटिक्स विल नेवर शो इफेक्ट एट ऑल दैट लेटर ऑन। अभी हमें टीट सीलेट्स भी आए हैं आफ्टर मिल्किंग। जब हम एनिमल को मिल्क करते हैं तो वी यूज टू डिप इन दीज टीट सीलेट्स सो दैट कि ये 15 मिनट्स तक आफ्टर मिल्किंग, ये 15 मिनट्स तक थोड़ा सा जो मिल्क पोर होता है वो ओपन रहता है। तो अदरवाइज देयर इज अल्लाह ताला ने ऊपर मैकेनिज्म रखा है, देयर इज अ स्फिंक्टर मसल, वो कंस्ट्रिक्ट होके इसको क्लोज कर जाता है।
लेकिन दोज 15 मिनट्स हम क्या एडवाइस करते हैं कि आपको ड्यूरिंग मिल्किंग नहीं या प्रायर मिल्किंग नहीं आपको कुछ चारा डालना है, आपको जब मिल्किंग आपने की उसके बाद एनिमल को कुछ फीड करना है, घास डालो, कुछ फीड डालो, सो दैट कि एनिमल उसके साथ खाने में लग जाए और 10-15 मिनट में ये बैठ ना जाए, ये खड़ा ही रहे, सो दैट दिस इट गेट्स दिस टाइम 10 to 15 मिनट, सो दैट वो क्लोज होके फिर अगर ये बैठ भी जाएगा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. Then automatic milking systems, as I earlier mentioned, this milking machine systems. Then mastitis detection sensors. Now in majority of countries in Western countries, these have been developed this mastitis detection sensors. कि हम जैसे अभी हमें ग्लूकोज ट्रिप्स आए हैं इंसुलिन कि हमें हमारा ग्लूकोज लेवल कैसा है, वैसे हमें यहाँ पता चलता है कि वेदर वी हैव क्लिनिकल और सब क्लिनिकल मास्टाइटिस आर नॉट. लेकिन हमें फील्ड में या डिस्ट्रिक्ट वेटनरी लैब्स या इवन सुकास्ट में भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल है. बाय द टाइम दीज थिंग्स कम इनटू आवर दिस रीजन, we must go for culture and AST based antimicrobial. Then of course there is a scientists have done tremendous and significant amount of research in this area, but still there is a scope for still research and development in this sector. Importance of region specific, what majority of the microorganisms are prevalent in this sector, in this region. Then exploring traditional remedies or methods, जैसे मैंने बोला कि पहले हमें वो सॉइल बेस्ड वो रहते थे फ्लोर, हम पे उस पे फिर थोड़ा सा सिट्रे यूज्ड सिट्रे डालते थे, सो दैट कि अगर कुछ मॉइस्चर आ भी जाए वो सोक हो जाए, क्योंकि सॉइल हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू सक as compared to this concrete floors. Concrete floors remain wet for, और concrete floors slippery भी होते हैं, तो उससे दूसरे खदशात भी रहते हैं कि एनिमल अगर फॉल हो जाए तो they are prone to fractures and all that. Collaborative efforts with research institute. Thank you. अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम. Right. We have so many cases and normal cases से लेकर extreme chronic cases. Right. एक चीज बताइए, फील्ड में जो आपने कहा ना कि we have here diagnosis की एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक, राइट, या कल्चर सैंपल. कल्चर फील्ड में नहीं है एंटीबायोटिक, एएसटी बेस्ड है. वही, बट हमारे जो फील्ड डॉक्टर्स हैं they will rely on certain diagnosis के लिए. राइट. कल्चर वहाँ से हम कह रहे हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कितनी फैसिलिटी है फील्ड में? That is I am was जो आप अभी कह रहे हैं ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, right. alarming and veterinarians are to be blamed. See, one of the slides of this PPT was that where government has to intervene. Exactly. Since no policy maker was sitting here, I have removed that because keeping in view the audience. I was supposed to brief you and see what is the scenario in Kashmir division. But the thing is, if there would have been policy maker as well, there is definitely room for improvement in the field conditions, field infrastructure. Unless देखो अगर कपवारा में या पहलगाम में या कुलगाम में कल्चर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, he has to come to this place or he has to go for this private institution, and culture it costs around 1500-1600 rupees. That's an additional cost. I see, we have to keep these things in. Therefore इसलिए मैंने वो हटा दिया वो स्लाइड, otherwise there was a slide कि we need to improve infrastructure, field infrastructure as well. वो गवर्नमेंट के लिए है या पॉलिसी मेकर्स के लिए है. Since none of the policy makers is our audience are here, we are not delivering this to the policy makers, we are delivering to the dairy farmers or entrepreneurs. So that is why that slide was. That means we have sources. Exactly.
जो सेंट्रल हॉस्पिटल्स होते डिस्ट्रिक्ट कुछ डिस्ट्रिक्ट वेटनरी हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे कल्चर्स जो टेस्ट्स है वो सेटअप हुए हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज हमें वहाँ पे कंसल्टेंट पोस्ट नहीं होता है. सी आई एम अ फार्माकोलॉजिस्ट, टुमारो आई विल बी पोस्टेड देयर. जब वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे या पैथोलॉजिस्ट जो रिलेटेड, तो बहुत सारे डॉक्टर साहिबान ने वो लैब्स एस्टेब्लिश किए थे. वहाँ पे फैसिलिटी कल्चर फैसिलिटी बड़गाम में थी, श्रीनगर में थी एंड अनंतनाग में भी थी, इवन बारामूला में भी, क्योंकि वो माइक्रोबायोलॉजी से ही थे. लेकिन हमारा गवर्नमेंट का पॉलिसी एक रहता है कि रोटेशनल ट्रांसफर, वहां से उस बंदे को आप 2 साल 3 साल के बाद हटाना. वहां पे सर्जन को लगाया गया उसी पोस्ट पे. गवर्नमेंट को वो पोस्ट नहीं, यहाँ पे मेडिकल जैसा नहीं है कि वी हैव अ कंसल्टेंट टाइप पोस्ट. That's a challenge. That is where government has to intervene. We have framed a policy that this department needs a reorganization. We need some consultant-based posts like this CP, clinical pathologist, where there can be posted a pathologist. Similarly, microbiologists and all that. So this is a hiccup from government side. We are handcuffed as far as this challenge is concerned. Thank you. Thank you, Dr. Shabir for this wonderful brief about mastitis. What is the scenario of mastitis in Kashmir Valley currently? Thank you so much. I know Dr. Shabir Ahmad is my batchmate as well, one of the most humblest person, most knowledgeable, brilliant person in our class. Thank you so much for giving us your best time. Thank you.